Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Manthan Taylor and welcome to another tutorial video in QGIS. Friends, today we shall be exploring certain vector operations for which I have taken two polygons over here. यहाँ पे आप देख सकते हैं we have Sita Mata forest range which is a part of central India, and the last layer behind both the polygons are Google satellite which shows the representative type of topography or land use type behind these two पॉलीगन्स। अब यहाँ पे ये मैंने एक डमी और हाइपोथेटिकल पोटेंशियल माइनिंग साइट ली है जिसके एंड विद हेल्प ऑफ दिस डेटा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर ऑपरेशन। सो फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम कि ये जो पोटेंशियल माइनिंग साइट्स है उससे फॉरेस्ट का कितना एरिया कवर होगा या फॉरेस्ट का कितना एरिया लूज होगा। इफ इन केस दैट इज द ऑब्जेक्टिव, वी गो टू जियो प्रोसेसिंग टूल, वी क्लिक ऑन क्लिप। सो यहाँ पे इनपुट लेयर जिसको हम देंगे उसमें से ओवरले लेयर अपने एरिया में जितना आ रहा है उतना पार्ट उसको क्लिप करके अलग से एक फाइल प्रिपेयर कर देगा। सो हियर वी हैव द क्लिप्ड एरिया, एंड इफ वी आर एडिंग द ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूट्स टू दिस, यू चेक आउट द एट्रीब्यूट टेबल, ये फॉरेस्ट का उतना एरिया है जो आपकी माइनिंग साइट में फॉल करता है, एंड दिस मच एरिया इफ इन केस द माइन एरिया इज परमिटेड, दिस मच एरिया वुड बी लॉस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो ये हो गया क्लिप ऑपरेशन। नेक्स्ट, convex hull will be taking with another type of data set, तो इसमें से we will check out all but convex hull and eliminate silver polygons. Second one is difference, तो ये जो दो areas है उसमें से कितना difference है, when we take the input layer, the other one is mining, तो input layer के consider में बाकी का layer कितना different है। Let me change the layers or input layer and overlay layer, you will get to know that there is another result। जैसे यहाँ पे मैंने input layer जो लिया है उसके हिसाब से I am getting this one as one of the output of my difference operation, but if in case I replace the data, I'll get to know कि अगर forest area का जो area है उसको हम allow ना करें mining के लिए, so how much mining area would be left with you। So let me just alter the values. I am taking mine and then taking the forest, click on run, and there you go, you get the area that is available if in case the forest land is not allowed for mining activity. Next, we move ahead with, okay, let me just uncheck this. Then we have the intersection. So intersection between two areas, what would be the result? Let me take the forest as the input layer and overlay layer as the mine. Now दोनों के पीछे मैंने PRO extension लगाया है, that means these are the projected data sets, right? So this is the intersection, दोनों layer का intersection area कितना है, that you will get from this particular area or this particular operation। देन यू हैव डिसॉल्व। अब डिसॉल्व के बारे में मैं आपको बताता हूँ, बिफोर दैट वी टेक द यूनियन, राइट। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सो व्हाट दिस विल डू इज, ये दोनों एरिया का कॉमन एरिया छोड़ के बाकी का एरिया आपको अवेल करवा देगा एज एन आउटपुट पॉलीगन। सो इफ आई अनचेक other things, this is what your symmetric difference would appear to be, right? जिसमें जो common area है that will be removed and other parts would be represented as one single or multiple polygons as the number of polygons exist in the output। Next, let me check this too, and then I'm clicking on union। अब union में मैं क्या कर रहा हूँ, I'm uniting all the layers। I'll show you how the output would take place। तो यहाँ पे forest जो है उसका और mining का जो area है, I'm creating a union of it। So here, if you could see 1, 2, 3 and 4, there are 4 types of polygons which are created, and if you would check एट्रीब्यूट टेबल में सारे के सारे एट्रीब्यूट्स भी डुप्लीकेट्स में आ रहे हैं। सो फॉर दिस फॉरेस्ट एरिया ID2 doesn't exist because this ID2 it belongs to this two polygons which are created, right? अभी मान के चलो कि ये चार अलग अलग पैचेस है फॉरेस्ट के, एंड देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर supposed to be one single patch, so you want this to be behaving as one single vector layer। उस केस में हम क्या करते हैं, we click on geo processing and then
we click on dissolve. अब dissolve में I am using this union one and click on run, and as an output you would see that all of the layers have been dissolved into one single type of entity which is represented in the attribute table. So this was a quick uh, tutorial about various geoprocessing tools that exist. और एक चीज ध्यान में रखिए कि input layer और overlay layer जो है that is very important, and that will decide what types of outputs you would get. दूसरी चीज, ये जो भी आप ऑपरेशन ओपन कर रहे हैं, जो भी टूल ओपन कर रहे हैं, you will get a description of the same, that what would be the outcome. So I would recommend you to practice this, and if in case you're facing any difficulties, please feel free to bring it to my notice. I would be very happy to help you out. Thank you all. Have a good day.